We are dealing with an infectious disease. We are dealing with an infectious disease that the disease which transmitted from infected person to healthy person are known as infectious disease. Lifestyle including diet, rest and exercise, that is important for the health of a person. Rest and drug and also alcohol abuse also affect our health adversely. तो ये बुरे प्रभाव जो चीजें हमारी बॉडी पे डालती हैं या हेल्थ पे, उनके बारे में बताया कि जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, डिजीज आर ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और इसे आप ध्यान दें। डिजीज विच ग्रुप इन्फेक्शियस, द डिजीज विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम one person to another are called infectious disease. There are a lot of examples of the infectious disease. For example, dengue fever, malaria fever, coronavirus, etc. These are COVID, is the infectious disease that becomes very early from epidemic to pandemic. Here I want to clear the meaning of epidemic and pandemic. ये question इस बात जरूर आएगा. What is difference in epidemic and pandemic? Epidemic means the disease which localized to a particular area, that is known as epidemic disease, and pandemic disease which spread all over the world or all over the globe, that is known as pandemic disease. COVID-19 becomes the pandemic, so early becomes the pandemic. WHO can't understand the or can't give proper guidelines for this, but so before it becomes the pandemic. Disease which are not transmitted from one person to another are called non-infectious disease. For example, cancer is non-infectious disease, but it may cause the death of a person. Common disease in human. In this chapter, you have to study the 13 common disease that given in the NCERT, or always one disease asked in the exam. That is, it may be a 5 marks question or the 3 marks question. Organism belong to bacteria, virus, fungi, protozoan, helminthes. Cause disease in man. Such disease-causing organisms are called pathogen. The first disease is the typhoid. You may note it. इसको आप लिख लीजिए. First disease क्या है? Typhoid है. Its pathogen is Salmonella typhi. Write down on the copy. ये main word आप कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए. Salmonella typhi. Organ affected small intestine, migrate to other organ through blood. Method of transmission, contamination, food and water. एक यहाँ पे ये ध्यान रहे आप लोगों को, इस पे भी क्वेश्चन काफी बार आता है. नेम द ऑर्गन अफेक्टेड इन ए पर्टिकुलर डिजीज. फॉर एग्जांपल टीबी, टाइफाइड, टेटनस एक्सेट्रा. जितने भी बीमारियां उनका ऑर्गन अफेक्टेड आपने इसमें पीपीटी मैंने अच्छी तरह दिखाया है. जैसे कि टाइफाइड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाती है. और ये फैलती कैसे हैं? Contamination of food and water. By using the antibiotic, we very much control these bacterial disease. But problem is about the viral disease. The symptoms of the typhoid are high fever. The temperature may be 39 degrees to 40 degrees centigrade or 100 to 104 degrees Fahrenheit. Continue fever, not break it. Weakness, stomach pain, constipation, headache, and loss of appetite. Intestinal perforation may lead to death. Test for typhoid fever could be confirmed by Vidal test. So you also know the test also. जितनी भी आप ये डिजीज पढ़ेंगे, इन सभी के टेस्ट आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए. You must know about the test of these disease. For example, in typhoid, that is the test of these disease you may also know. For example, in AIDS, that is confirmed by ELISA test, ELISA. Test for AIDS is ELISA. Then test for the biopsy test for the cancer, biopsy test for cancer, and after that test for TB, that is ESR. Test for TB is ESR. So that all the disease you must know about the confirmed test for these. For example, in typhoid, I have tell you that the Vidal test is doing. Then pathogen, pneumonia. Then secondly, pneumonia. It is caused by Streptococcus pneumonia. You may note down the
pathogen of pneumonia, Streptococcus pneumonia, and Haemophilus influenza. Haemophilus, organ-affected alveoli of lungs. Alveoli get filled with fluid. इसके अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर या एल्वुलाई के अंदर वो फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है. The symptoms of the COVID-19 are also looking like that of pneumonia, or it may become more dangerous if the person is suffering from asthma or respiratory problem, etc. Method of transmission: inhaling the droplets, aerosols released by the infected person. तो इसके अंदर हवा के अंदर हम जो ड्रॉपलेट्स वगैरह छोड़ते हैं, उससे क्या होता है कि आजकल के जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो चुकी है, therefore the COVID-19 also can spread through the droplets, aerosols, which may remain for a long time in the air. So must wear the mask to prevent yourselves. Symptoms: fever, chills, cough and headache. तो सबसे पहले निमोनिया के सिम्टम क्या है? फीवर, ठंड लगना, खांसी और उसे. In severe cases, the lips and fingernails turn grey to bluish green because oxygen supply is not sufficient. In also there is a COVID, you can check the oximeter. यहाँ पे आजकल एक ये टर्म और भी काफी important है, but it's oximeter. It is a device which is used to check the oxygen level of a person in the blood. तो ऑक्सीजन लेवल के लिए यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए क्लियर कर दूं कि अगर 98% से कम है, इट में काज प्रॉब्लम. जो 90 से कम हो जाता है तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है और पर्सन को वेंटिलेटर पे लेके जाना पड़ता है. तो ये पॉइंट ध्यान रहे कि आजकल आप थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर अपने घर पे भी रख सकते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक करते रहिए, सो दैट इट मे बी चेक डाउन. और इसके जो सिम्टम है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, आवाज में आएगी, and it is usually last for 3 to 7 days. Then you can understand about the malaria. Pathogen of the malaria is Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovule, Plasmodium falciparum. तो बाकी प्लाज्मोडियम तो इसके ठीक है, इसमें कॉमन फीवर होता है और जो कि 1 day आफ्टर रिपीट होता है फीवर. कंटिन्यू फीवर नहीं रहता टाइफाइड की तरह, इसमें रिपीट होता है. और यहाँ पे एक और है, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की इन्फेक्शन है तो उसके अंदर पर्सन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगी, जो कि सिम्टम डेंगू फीवर के साथ मिलता जुलता है. तो मलेरिया के अंदर भी आजकल ये प्रॉब्लम आ गई. मैलिग्नेंट मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज फैटल. ये कई बार बहुत ही डेंजरस हो जाता है, इट मे कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. ऑर्गन अफेक्टेड इन मलेरिया इज लीवर, RBCs. Then mode of transmission by the bite of the female Anopheles mosquito. ये vector है. What is difference between vector and pathogen? This is also a important term. Symptoms of high fever and chill fever occurs on every alternate day. Every alternate day पे होता है. इसमें vomiting होती है. Symptoms are central headache, systemic fever, muscular fatigue pain, back pain, स्किन ठंड लगना, रेस्पिरेटरी ड्राई कफ, स्प्लीन इनलार्ज, स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, स्टोमक, नोजिया एंड वॉमिटिंग. ये सारे ऑर्गन इफेक्टेड हैं इसमें. नाउ यू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेज. मॉस्किटो, अगर हमें मच्छर काटता है तो उसमें बॉडी में किस स्टेज में ये इन्फेक्ट होगा? तो आप कहेंगे स्पोरोजोइड्स. You say the sporozoites migrate to salivary gland. So you say in the salivary gland, sporozoid infected with mosquito bite goes to the liver. और उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स में जाएंगे और वो गोमेटोसाइट्स बनाएंगे, पैरासाइट सकअप, फिर ये मच्छर इसको सकअप कर लेगा. Then the सकअप ओस्टाइन, और उसके बाद फिर वो स्पोरोजाइट्स बनाएगा और वो स्पोरोजाइट्स ह्यूमन बीइंग में ये कट करेंगे. ये two parasites are required. Two hosts are required to complete the life cycle of a mosquito. Plasmodium, तो स्पोरोजॉइट और हीमोजॉइन है, वो टॉक्सिन है. हीमोजॉइन क्या नाम है? टॉक्सिन है, जो कि इसके स्पोरोजॉइट छोड़ते हैं और जिसके कारण ये फीवर होता है. और ये रेड ब्लड सेल जब ब्रस्ट होती हैं तो उससे फीवर होता है बॉडी का. लाइफ साइकिल ऑफ ए मलेरियल पैरासाइट. द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर two hosts, human and anopheles, to complete their life cycle.
Life cycle of Plasmodium starts with injecting sporozoites through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiplied within the liver cells and then attack the red blood cells, resulting in their rupture. The female mosquito take up gametocytes with the blood meal, formation of gametes and fertilization takes place in the intestine of mosquito. The zygote dwells further. The zygote dwells further and form the thousands of the sporozoites. The sporozoite migrated into the salivary gland and mosquito. When the mosquito bite, another human sporozoite are injected. Then next disease is the amoebiasis. The pathogen of the amoebiasis is Entamoeba histolytica, a protozoan parasite, organ affected large intestine of man. Organ affected. Method of transmission: housefly act as the mechanical carrier, contamination water and food with the fecal matter. Symptoms of these are loose motion and abdominal pain, stool with excess mucus and blood clots. तो इसमें लूज मोशन होती है और उसके बाद स्टूल विद एक्सेस म्यूकस. Then next is the Ascariasis pathogen. Ascaris lumbricoides, nematoda, organ affected intestine of man. Mode of transmission: contaminated water, vegetable and fruits. Symptoms: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of intestinal passage. Intestinal का जो passage है वो ब्लॉक हो जाता है, जैसे पेट के कीड़े कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में. देन फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस. फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस में हाथ पांव जो होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं बहुत ज्यादा. इट इज काज्ड बाय ब्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी. ऑर्गन अफेक्टेड lymphatic vessel of the lower limb, genital organs. Method of transmission: biting the infected female Culex mosquito. Chronic inflammation of the organ, abnormal swelling of lower limbs and scrotum penis. Hence a disease named as elephantiasis or filariasis. After that, the ringworm, ये common fungal disease है. It is caused by the Microsporium, Trichophyton and Epidermophyton. Organ affected: skin, nails, fold of skin and groin. Armpits. Method of transmission: acquired from the soil using towel, clothes or even comb of the infected individuals. Symptoms: appearance of the dry scaly lesions in the skin, nails and scalp, lesion accompanied with the intense itching. Prevention and control of the infection, that is also very important part of this. Today we are doing up to this. Maintenance of personal and public hygiene. ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन लेंगे. टेकिंग वंस ओन केयर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द पब्लिक हाइजीन. अब क्या है कि हमारे चारों ओर की साफ सफाई बहुत जरूरी है. बड़ा इसे पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कीपिंग द बॉडी क्लीन. Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning of water reservoirs, pools, avoid close contact with the infected person. Yes, this is also the very important type for the in the today's COVID-19 time. Avoid close contact with the infected person. If you go to a hospital, then you must go take the 100% precautions for your life. For vector-borne disease, controlling vectors and the breeding places, avoiding stagnation of the water. In around residential area, use of mosquito nets, window and doors must be fitted with wire mesh. All these precautions are useful for the vector-borne disease like dengue, chikungunya, malaria and filarial disease. These are also called as the prevention of infectious disease.